traveling to one of the most spiritual places on the planet. A land that is poetic and colorful in every aspect. A land resonating the sound of serenity and spirituality. A land where myth and reality goes hand in hand. A land that lies amidst the shadows of the Himalayas. Welcome to the Valley of Living Gods. Beyond the forbidding heights of Greater Himalayas, and by the banks of the shining river Beas that quenches the thirst of thousands of people, lays the fabled Silver Valley, which is also known as the end of the habitable world. The temples here are unique and are complemented by the natural setting of this region, attributed by verdant valleys and towering mountains, conjures up a vision of serene ambience and makes it spectacular. The land treasures ancient and some of the finest wooden and stone temples, with magnanimous carvings and admirable handicraft. The craftsmanship and treatment of every inch on the temples, castles and forts here exhibit the sensitivity of the people, their love for art, and their insatiable love for the valley. The valley is known as the Valley of Living Gods, despite the fact that here gods are worshipped with full divinity and tradition. देव भूमि इसलिए कहते हैं ना जी, ये तो देवी देवताओं का ही देश है। कुल्लू जो है देवी देवता का ही देश है, इसलिए देव भूमि कहते हैं क्योंकि देवी देवताओं ने वास किया डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक तो मानते हैं देवी देवते को यहाँ बहुत ज़्यादा, इसलिए जो है इसको देवभूमि कहा जाता है। The Devtas, residing in the land of Kullu, are not just idols sanctified in temples, but these are the moving gods. Gods that can run, dance, rejoice, and show anger as well. Gods are represented with palanquins, studded with metallic mohras, adorned with variegated clothes and flowers, and lifted on the shoulders by 2 men, or 4 even. The mohras in the palanquin are symbolic of the Devtas, and not the idol itself. Women have hardly any role to play in the affair of gods. These gods travel on palanquins and are consorted by a band of musicians, attendants, followers, and carriers of symbols of divine articrafts. The palanquins, believed to be ridden by the Devtas, often becoming animated or possessed of spirits,
shows various human moods like anger through rushing frantically, happiness by dancing in a leisurely manner. Even meeting with other devtas. The entire palanquin, though carried by men, moves according to the will of devtas. Besides this, the devtas speak through the medium of gur and answer their queries and blesses them. The reins of the palanquin is in the hands of Devta himself. It is believed to be possessed with divine power. The sound of dhol, nagara, shehnai, dhauns and ransingas lift up the soul. And in split second, you feel the whole Devlok has arrived on the earth. The day is full of chaos and religious enchanting, exciting and deistic. Gur is the mediator between the Devta and the devotees. The Devtas choose them and maintain physical influence on these people by entering their body. The Gur adheres to the oath of truthfulness, as well as moralizing and enthusing people to live life upright and walk on the rightest path. The devotees consult the Gur in time of need. He also looks into the matter of justice whenever the judiciary is doubted. गुर की एक खानदान होती है, उसको देवता जी द्वारा चुना जाता है। तो वो इस तरह से चुना जाएगा, वो एक परंपरा के हिसाब से, कि उस खानदान के जितने भी सदस्य होंगे उनको एक लाइन में खड़ा किया जाएगा और उसके बाद जिसके ऊपर देवता जी अपना छत्र डुला दे अर्थात झुक जाए जिसके ऊपर, तो उसमें ऑटोमेटिकली जिस प्रकार से सुदर्शन क्रिया में वाइब्रेशन आती है तो उसी तरह से उसके शरीर में वाइब्रेशन होगी। जैसे हम ध्यान में बैठ जाते हैं, जब ध्यान में बैठ जाते पहले तो धरती ही हिल जाती है। जब धरती हिलेगी तो एकदम से शरीर में जो है बासा हो जाता है। तो शरीर में बासा हो जाता तो एकदम से अपनी आत्मा बाहर हो जाती है और अपना दिल जो है भटकन हो जाता है। जैसे शरीर भटकन हो गया, फिर एकदम से मतलब शरीर में कांटे उभर जाते। कांटे उभरने से जो है बिल्कुल बेबस हो जाता है। जैसे बेबस होने के बाद जो है वो पूरी खेल आ जाती है। जो पूरी खेल आ जाती है, खेलने के बाद जो है जो सिर में जो इनका जो ताज पगड़ी जो लगी है ये मालकों की है, तो ये अपने आप ही मतलब उठ के दूसरे के हाथों में आ जाती है। बस उसी तरह से जो है देव बानी से जो है किसी के दुख सुख को निपटा देते। सोना चांदी कभी बात नहीं करेगा, ना सोना करेगा बात, ना लोहा करेगा, ना पित्तल करेगा, कोई भी धातु बात नहीं करेगा। ये विषय वाणी एक ऐसी चीज़ है, तो ये मतलब खेल आएगी उस गोल में। हम कहते हैं जो देवते का होता है उसको कहते हैं मुकुट, यहाँ से नीचे चेला कहते हैं। हमारे जो मातृभाषा जो है, मातृभाषा में हम कहते हैं तो गुरमुख से जो है देववाणी निकलेगी, जो मतलब और कहेगा वो मतलब पूरे हरियाणा को मान जाता है। The valley celebrates the divinity of the supreme power with a unique yet devoluted way.
They celebrate the existence of devtas residing in the valley, rather than worshipping the statues. The Dussehra at Kullu is one such important event that glorifies the valley of gods. The Dussehra at Kullu commences on the 10th day of rising moon. This mega festival witnesses coming down of 550 deities to the valley on their respective palanquins. After the whole country winds up the celebration of Dussehra by burning the effigies of Ravan, the Dussehra at Kullu begins. The Kullu Dussehra is more than just a festival. The gathering at Dhalpur ground of Kullu is an amalgamation of tourists, pious and spiritual people enthralling the sanctity and festivity of the Dussehra. Kullu Dussehra entices much of people's interest due to the Rath Yatra of Lord Raghunath that beholds the mystifying secret and folklore of this land of gods. With the ascending balloons in the sky, fear, doubt, pain, anguishness are let go, and what is left on this land of devtas is oneness of existence. To add up to the traditional and aesthetic pleasures of this historical, religious and mythical event, in 2015, 15,000 artists performed the pride of Kullu, Nati, the colourful folk dance of Kullu, in a bid to spread the message of saving girl child, Beti Hai Anmol. 15,000 artists, attired in the traditional red dresses, enthused with festivity, dancing on the folk music, entered the Guinness Book of World Record with a satisfactory reason. The vibrant red covered the ground of Dhalpur. Rejoice in festivity and chastity, for the tsunami of people jumping, enjoying, filled the entire ambience with positivity and competence. Even, the night plays a prominent role. The crowd is doubled as in the day. After the dark, you can still have an old-fashioned night out. Jag är utsänd av landets ministrar för att söka vår blivande prins. Och jag har lovat att jag inte ska komma tillbaks förrän jag kan berätta för dem var han finns. Jag fick 2 stycken tecken att hålla mig till när jag började födelsemärke som såg ut som en ros och en märklig gyllene ring. La na 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 na, la na 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 na, la na 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 na. Och jag började leta på finare ställen dit en prins kunde tänkas gå. Sen fortsatte jag på krogar och fack och överallt där jag kunde komma på. Och jag sökte den gyllene ringen i
Facebook